कुछ questions you see them and you know that 90% of the people are going to mark the wrong answer, and that is where you need to take advantage. Hi guys, I hope all of you are doing very well. I have so much content to shoot for you guys, especially because NEET is so close now. But my laptop and even my phone now is just giving me such a hard time, and I have been trying really hard to resolve these issues, but I don't know, they just keep persisting, and I get them fixed, but it keeps coming back, and even my camera isn't working now. And so right now I'm just trying to shoot this quick video. I'm using my front camera, which I really didn't want to do because it ruins the quality. So first of all, thank you so much for 15k subscribers. Our channel recently hit that milestone, and I also have a special something for you guys, so keep watching till the end. There's this one super important tip I have to share with you guys because it was so helpful for me. You know how most of us have the habit of just being addicted to our phones and using it and scrolling through our phones for no reason. So I actually used my phone very beautifully during my NEET prep because I utilized it fully. So how I made full use of my phone and YouTube during NEET prep was कि basically, like I told you guys, while eating my food, I used to solve PYQs. अब उन PYQs में अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन दिख जाता था जिसको जो फर्स्ट उसमें सही नहीं होता था, what I used to do was I used to take a screenshot. I used to make a folder separately of each subject or each subtopic or something like that, and I used to save it there. इससे क्या होता था, at the end of the day जब मैं थोड़ा सा बुक्स से हटना चाहती थी बट पढ़ाई से नहीं हटना चाहती थी, तब मैं अपना फ़ोन खोलती थी एंड मैं उन फोल्डर्स को रिव्यू करती थी. आई यूज्ड टू गो थ्रू दोज फोल्डर्स, आई यूज्ड टू गो थ्रू माय मिस्टेक्स. बेसिकली एवरी डे आई यूज्ड टू रिपीट दिस प्रोसेस. जो भी उस दिन की मिस्टेक्स थी वो मैं एट द एंड ऑफ द डे जब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता था तो मैं उनको रिव्यू करती थी. आई एम गोइंग टू शो यू अ डिटेल्ड स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हाउ आई मेड दैट. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते थे जिसमें मुझे कैलकुलेशन समझ नहीं आती होती थी, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके उसकी पिक्चर क्लिक करके एक अलग फोल्डर बनाती थी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, ताकि एट द एंड ऑफ द डे मैं अपनी कैलकुलेशन को भी रिव्यू करूँ. क्योंकि क्या होता है कि मेकिंग अ मिस्टेक, यू आर फीलिंग बैड अबाउट इट, but you forget that you made that mistake and hence you are not able to rectify it. But when you do this, when you take a screenshot or you take a picture and you save it in your folder, it stays in your brain. आपको याद आएगा एग्जाम के टाइम कि हाँ ये गलत हुआ था, इसके लिए स्पेशली मैंने एक फोल्डर बनाया था एंड उसको रिव्यू भी करा था, एंड सो आई रिमेंबर दिस. So I'm going to show you a screen recording of how I named the folders and how I made the folders. उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि exactly मैंने कैसे किया था. तो बहुत बारी ना ऐसे questions होते थे जो बार बार गलत होते थे, तो उनका मैं एक अलग फोल्डर बनाती थी. फिर मैं ऐसे चैप्टर्स और ऐसे questions का फोल्डर बनाती थी जो मेरे को रिपीट करने हैं, लाइक एग्ज़ाम के एक दिन पहले या एग्ज़ाम के 2 दिन पहले. फिर एक जो मेरा बहुत ही फेवरेट फोल्डर था, दैट वाज रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस जो मैंने अपने आप से एक बहुत ही यूनिक सा नाम रखा था, विच बेसिकली मेंट कि ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग गलत करते हैं एंड वो मुझे सही करने हैं. तो एज यू कैन सी द फर्स्ट फोल्डर जो यहाँ पे है, ये कॉन्सेप्ट था जो मुझे समझ नहीं आया था, जिसका मैंने नोट बनाया था. सो उसको मैंने डाउट्स के नाम से रखा था. नेक्स्ट इज़ बायो के जो भी क्वेश्चन आते थे यूट्यूब पे और जो मेरे से गलत मार्क होते थे उनको स्क्रीनशॉट करके मैं एक ये फोल्डर बनाती थी. देन पर्टिकुलर चैप्टर में, जैसे फिजिक्स का कोई एक चैप्टर हो गया, उसमें डाउट था तो उसका ये एक फोल्डर. फिर एक ये वाला जिसमें एक दिन पहले एग्ज़ाम के जो मुझे क्वेश्चन रिवाइज करके जाना है क्योंकि बार बार गलत हो रहा है, वैसा एक फोल्डर था. फिर मैंने अनअकैडमी का एक मॉक टेस्ट दिया था जिसमें जो भी क्वेश्चन गलत हुए थे उसका एक फोल्डर बनाया था. फिर फ्लूइड्स में या कोई भी और चैप्टर में जो कोई क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है उसको रिपीट करने के लिए, सिमिलरली ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, इनके भी अलग अलग फोल्डर्स बनाए हुए थे मैंने. फिर जैसे कि एक बहुत ही पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिख जाता था, उसका मैं एक अलग फोल्डर बनाती थी, कोई भी चैप्टर हो जैसे. फिर रोटेशन के जो क्वेश्चंस मैंने रिपीट करने हैं, वर्क बाय एनर्जी के जो रिपीट होने हैं, उन सब का भी एक अलग फोल्डर बनता था जो मैं एंड ऑफ द डे रिव्यू करती थी. उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस होते थे जिसमें एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ करना पड़ता था, तो मैं उसी मेथड के नाम से उस फोल्डर को नेम करती थी ताकि मैं फॉर श्योर उसको भूलूँ ना. सेमीकंडक्टर्स जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनमें बहुत ही ना एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट लगता था, जैसे ये क्वेश्चन आई ऑलवेज फॉरगेट, ये मैंने फोल्डर का नाम रखा था क्योंकि आई ऑलवेज फॉरगेट. सो अब इससे फिर मुझे एंड तक वो याद था.
रिलेटिव वेलोसिटी से एक दिन पहले जो मुझे एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट रिव्यू करके जाना है, बिकॉज वो ढंग से समझ नहीं आ रहे थे, तो आई थॉट कि अगर ऐसे आ जाए तो मैं वैसे ही कर लूँगी। अब इस फोल्डर का भी नाम आप देखो कितना यूनिक है, जो विच एक्चुअली रियली हेल्प्ड मी। मतलब फ़ोल्डर्स को भी मैंने बहुत स्ट्रैटेजिकली नेम करा था। इट वाज़न्ट जस्ट कोई रैंडम नाम जिससे बाद में समझ में भी ना आए, बट द नेम इटसेल्फ वाज़ वेरी डिस्क्रिप्टिव, व्हिच हेल्प्ड मी टू रिवाइज़ माय मिस्टेक्स एंड रिव्यू माय मिस्टेक्स। फिर मैग्नेटिज़्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्री-वाई-क्यूज़ जो नहीं समझ आए थे, उनका एक बार स्क्रीनशॉट लेके, फिर बायो के तो मैंने ऑलमोस्ट हर चैप्टर के प्री-वाई-क्यूज़ जो थोड़े टफ थे। एंड नाउ माय मोस्ट फेवरेट एंड माय मोस्ट हेल्पफुल फ़ोल्डर, रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस। जब मैंने ये वो क्वेश्चन थे जिनको मैंने जब देखा तो आई थॉट कि यार ये काफ़ी ट्रिकी है, एंड ये मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें कंफ्यूज होंगे और गलत आंसर मार्क करेंगे। एंड यही वो टाइम है, यही वो क्वेश्चन है जिसमें आई हैव टू टेक एडवांटेज, एंड इस ऐसे क्वेश्चन से रैंक डिसाइड होता है। तो ये बहुत ही अच्छा फोल्डर था, एंड आई वुड रियली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू मेक अ फोल्डर लाइक दैट एंड जस्ट अ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। और जिससे कुछ कुछ क्वेश्चन में मुझे समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है, तो उनको भी मैं स्क्रीनशॉट करके रख देती थी कि इन केस मैं बाद में किसी से पूछ लूँ, डाउट क्लैरिफाई कर लूँ। एंड यही सब क्वेश्चंस जो बायो के क्विज़ में गलत होते थे, उनका एक अलग से बायो क्विज़ रॉन्ग करके फ़ोल्डर था। इसमें तो हज़ारों क्वेश्चन बिकॉज़ इतने सारे गलत होते थे, बट इट हेल्प्ड मी, एंड एक्चुअली बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने रेक्टिफाई भी करी एग्ज़ाम के टाइम पर। एंड यही फ़ोल्डर्स हैं बायो मिस्टेक्स, फिर से जैसे आप देख सकते हैं। This was something that really helped me a lot because when you're taking a break, you sort of tend to go towards your phone, or even when you're going to bed, it's a natural habit to just go through your phone once. So उसी टाइम में what I used to do was कि मैं इन folders के through go through करती थी, and it was so nice because जैसे sometimes if you're just taking a break, standing up to take a walk or something, or you're going down to just get some fresh air, you can just keep going through these folders. So guys, since NEET is very very close now, I know that most of you all would be wondering ki which topics you should do and which topics you should focus on in order to score the maximum number of marks. To help you out with that, and for the same, AV Publications has launched their Most Wanted series. As the name suggests, these books are going to consist of those questions that have a high probability of coming in the actual exam. It's going to focus on those topics which are the most important based on a previous year's analysis. In this entire series, my most favorite one has to be their biology one, because it's just got such a nice pattern. It's got like these little charts as well. Now the key feature of this book is that it's based on the very very effective 80-20 rule. It's got very concise, result-oriented theory. The most fun feature of this book is its SCAN feature, which stands for Special Cases Asked in NEET, with examples for the topics that are frequently asked. Got a topic-wise PYQ pattern, and they also have 3 question papers at the back of the book that you can attempt to check where you stand. So basically, this series of books is a NEET replica. It's going to give you the actual feel of questions जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं. You have to choose smartly which questions you are going to do at this point when you're short on time. So you should focus on questions जो आपको पता है कि इनके आने की probability ज़्यादा है, and for that this series is for you. Now I'm going to be giving away this set of books. It's got physics, chemistry and biology. To participate in the giveaway, just check out the description down below, and I really hope that this series helps you a lot. So अभी बहुत सारा कंटेंट प्लान्ड है, बहुत सारे जस्ट लास्ट डेज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, स्पेशली फ्रॉम मी, सिंस यू गाइज नो माई चैनल इज ऑल अबाउट एवरीथिंग डिफरेंट आई वुड से 2 महीने में प्रिपेयर करना, क्रेजी टिप्स यूज़ करना, बाथरूम में नोट्स लगाना एंड स्टफ. सो मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एंड बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डिड रॉन्ग while preparing and also while attempting. Yes guys, just be very motivated now. बस एक ही लास्ट लैप रह गया है, उसके बाद तो बस मस्ती मस्ती. Thank you so much for watching. I hope you guys implement this, and if it helps, please do let me know down below in the comments, and do enter the giveaway. All the best. Please stay positive. I know अब तो बहुत ही ज़्यादा पास आ रहा है, डर लगना शुरू हो गया होगा, बहुत एंग्जाइटी होती है इस टाइम पर, बट जस्ट stay calm because वो बहुत ही important factor होता है during NEET prep. And I'll see you guys in the next video.